We're making a start with the issue of the COVID-19 vaccine. Remember, it's still not here. It's not here anywhere across the world. But this issue was kick-started with the announcement that came in of providing a free COVID-19 vaccine to all people in Bihar, which was mentioned in the BJP manifesto yesterday. Now, after that announcement, it triggered multiple announcements coming in from other governments here as well. Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka have all jumped onto that bandwagon. Tamil Nadu and Karnataka say that they're ready to give it for free. There was a flip-flop as far as Madhya Pradesh is concerned, first saying free for all and then narrowing down to making it free for the most needy, for the poor. A clarification that came in from the Chief Minister. But let's also look at the national capital reacting that they will make COVID-19 vaccine free, saying that it's a non-issue. It has only been raked up because of the elections. आप दिल्ली में भी फ्री में देंगे लोगों को? दिल्ली के लोगों को जितनी भी वैक्सीनेशन है सारी फ्री ही दी जाती है जी। इसको राजनीति का मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है सर। बिहार में जिस तरीके से राजनीति में मुद्दा बना है, राजनीति की बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब हम दिल्ली में मानेंगे दिल्ली में सरकार जो है फ्री में वैक्सीन देगी? अरे आज तक भी सारी फ्री देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं। दिल्ली सरकार अपने लोगों को सबको फ्री देती है, फ्री देगी। सारी हेल्थ सर्विसेज फ्री है दिल्ली में। That's the Delhi State Minister, State Health Minister speaking to us here. But let's also get your reaction that's coming in from Maharashtra. Aslam Shaikh, their State Minister, saying that this government will try to make COVID-19 vaccine free for the residents of his state. Take a listen in. Mr. Shaikh, what exactly is the position of Maharashtra government? Will Maharashtra government also be giving corona vaccine to all at free of cost? If you go to see, when we were affected by the corona, we were the first to build the Jumbo facilities, and in Jumbo facilities we have given free treatment to each and everyone across the Maharashtra. We were the one to give the RT-PCR also free of charge. The moment vaccination will come, it's going to go. We are not a Jumla party where we are going to wait for the election and then we are going to declare. It is obvious the people who cannot afford in this city or in this state will definitely think over it about giving the vaccination free. Here there is no election. This issues was raised about the vaccination because of the Bihar election. The moment the vaccination comes, then definitely we are going to take a issue, and if needed, cabinet will give the sanction for it. But is Maharashtra government positive about giving a vaccine to free of cost? Because if you remember that a few months back when Mr. Poonawalla had said that his company is also working on that, but he said that it can't be at free of cost. See, right now if you go to see, the cost is going to be borne by the government itself. Whatever the RT-PCR cost has been borne by the government itself. And we are obviously having so many government hospitals and BMC hospitals in Mumbai across the state also. So when the vaccination comes, we are anyhow going to give. You are not going to wait for the election. The way I told you, the BJP had put into the manifesto because the elections are there. And are they going to give the state-wise according to the election? Are they going to wait for the people to die and then they are going to give? Instantly, the moment it comes, the people who cannot afford in this state are going to be given free of vaccination. So that's what we heard from Mr. Minister, who clearly said that Maharashtra government is thinking positive about giving this vaccine at free of cost to people of Maharashtra, and this is not any political promise. He said that the cabinet will definitely think positive about this particular issue of giving vaccine of corona to free of cost to people staying in Maharashtra. All right, so there effectively are several reactions that have come in from across states in responding to what became a controversy with that announcement in the BJP's manifesto. Let's get in a voice here from the BJP. We have Mr. Aditya Jha with us. Mr. Jha, thank you for being with us this evening. And a lot of the other reactions that we've gotten in other governments saying that this really is a non-issue. It's a given that this is a welfare issue, particularly giving free vaccines here to those who are poor. Actually, ये वैक्सीनेशन फ्री दे रहे हैं, ये अच्छी बात है सारी सरकारों को, लेकिन हमने पहले सोचा और हम इसको पहले कर पा रहे हैं, इसलिए लोग शायद इसको एक इलेक्शन मूवमेंट मान रहे हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर हमारी दिल्ली की आप सरकार ने 1500 रुपए केवल इस बात के लिए खर्च किए हैं कि जो मरीज है वो अपने घर में किस हालात में है। हम कहना चाहते हैं जो भी सरकारें फ्री में करे, वेलफेयर में करे, बहुत अच्छा करेगी, लेकिन इसके नाम पे भ्रष्टाचार ना करे और जनता को नहीं, बट आदित्य जी आप कैसे
आप कैसे कह रहे हैं कि आपने पहले सोचा, क्योंकि बाकी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं देश में वो ज़्यादातर फ्री ही होते हैं, स्पेशली फॉर द मोस्ट हु आर इन द मोस्ट नीडी, द पुअर, एंड दैट्स व्हाट अदर स्टेट्स आर सेइंग एज वेल कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं. इट्स अ गिवन दैट वी आर अ वेलफेयर स्टेट एंड वी वुड बी गिविंग वैक्सीनेशंस एज इवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर फ्री. इम्यूनाइजेशन या जो भी चीजें हैं वो फ्री. इसको एक इलेक्शन मुद्दा बनाया गया है. अगर वो मुद्दा नहीं है तो इससे इनके विपक्ष को डरने की क्या जरूरत है? अगर हमारी बातों से कोई जनता खुश होती है, वो हमारे साथ अट्रैक्ट होती है, हमारे से जुड़ाव महसूस करती है, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, ये थॉट्स है ना, वो पब्लिक को मिलनी तो चाहिए, लेकिन दे कौन रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, दे कौन रहा है? जब हम दे रहे हैं तो उसके बाद आप उसको चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, हम जनता के सुख और दुख के बारे में सोचते हैं, समझते हैं. जी, बट आपने इसको खास बिहार इलेक्शन के टाइम बिहार बीजेपी मैनिफेस्टो में ही अनाउंस किया. आपने पहले ये अनाउंस नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पहले कभी अनाउंस नहीं किया, तो द टाइमिंग इज बीइंग क्वेश्चनड हियर. नहीं, हम कब अनाउंस करते हैं? हम जब उस पैंडेमिक से उभर गए हैं. सर, सरकार ने इतने वेलफेयर पैकेजेस अनाउंस किए हैं, उसी में अनाउंस कर लेते. खास बिहार में जाके क्यों अनाउंस किया है इलेक्शन टाइम में? मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी अनाउंस किया है, बिहार सरकार ने भी किया है, देखा देखा महाराष्ट्र कर रहा है, धीरे धीरे सारे राज्य करेंगे. लेकिन मेरा कहना, नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए. प्रश्न फ्री या किसी चीज का नहीं है. नीति और नीयत अगर ठीक है और देश की जनता को इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके लिए मुझे लगता है विपक्षी दलों को प्रश्न खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि ऐसे सुटेबल काम करने चाहिए. हेलो. Let's in fact get in a word here. Aditya ji, आप हमारे साथ बने रहिए. We also have Mr. Charan Singh Sapra of the Congress with us on the phone line. Mr. Sapra, in your view, given the fact that the BJP now, in a counter-attack, says that there is nothing negative in talking about a free COVID-19 vaccination, at least this is something that has now come into the general discourse. Still political, but it has now come into a larger discourse here of making sure that whenever the vaccine is ready, it would be provided for free. Not saying that it is something negative, but the intention and the timings are, questioned always. The timing during the Bihar election and only saying that it will be given free for the people living in Bihar looks discriminatory. This vaccine should be for the entire nation, and in fact, Narendra Modi, who got more than 303 seats, should declare that this vaccine will be given free to the entire country. So this definitely is a case of discrimination. This definitely is a case of electoral lollipop or electoral jumla. So, Mr. Sapra, do you think that this should have come in as an announcement officially by the central government instead? Yeah, of course, it should have been announced by the central government. On one side, few days earlier, the Prime Minister says the vaccine is not ready and it will take another a year and a half for the vaccine to get ready. And immediately after a few days, he's announcing, the BJP is announcing, or Nirmala Sitharaman is announcing that free vaccine will be given to everybody. So this is somewhere they are trying to misguide the people of Bihar. They are trying to misguide the voters of Bihar. They are trying to lure the voters of Bihar, just promising a vaccine against a vote. This is deplorable, disgraceful for a central government to do this just for the sake of votes. Mr. Sapra, please stay on with us. Let me get in a final response to this from Aditya Jha of the BJP. Aditya ji, जैसे आपने सुना, as far as the nationwide vaccination program is concerned, these are announcements that come in from the central government. Central government से कब ये announcement आएगी? अगर आपने ये intention declare की है भाजपा की सिर्फ बिहार में, when can we expect this coming in from the central government? Because immunization, vaccination programs are largely announced and handled by the central government, even though furthermore implemented by the state governments. The first announcement of which that comes on this is from the central government. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे काम कर रही है और सप्रा साहब सीनियर लीडर हैं, उनको पता होना चाहिए कि स्टेट्स के राइट क्या है, नेशनल राइट्स क्या है. ये चुनाव जो है वहाँ की बीजेपी लड़ रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रही है. उसने अपना घोषणा पत्र किया है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है. दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई
सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बताइए। आप हमेशा प्रॉब्लम के साथ खड़े होते हैं। आप ये नहीं करते, आप वो नहीं आदित्य जी, करते, यही हम तो सवाल कैसे पूछा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये बोलने की, अगर वैक्सीन का मुद्दा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, किसी इलेक्शन के घोषणा पत्र में बताने की क्या जरूरत है? सिर्फ जरूरत है ना, हम उस जनता के लिए क्या करने वाले हैं, वो जनता हमारे लिए कितनी जरूरत है, हम क्यों वहाँ एम्स खोल रहे हैं, क्या बताने की जरूरत है, हम वहाँ क्यों स्कूल खोल रहे हैं, क्या बताने की जरूरत है। हम उस देश, उस स्टेट की जनता के साथ कितने कनेक्ट है, कितना हमारा जुड़ाव है, कितना हम उसके पास सोच पा रहे हैं। सपरा साहब दिल्ली में बैठ के शायद वैक्सीनेशन का अंदाजा लगा रहे होंगे, आप उतर के जरा बिहार में या उड़ीसा में जाइए, आपको वैक्सीनेशन का जवाब मिलेगा। और ये जो लॉलीपॉप की बात करते हैं, लॉलीपॉप तो 70 सालों तक इन्होंने इस देश की जनता को दिया है, और वो लॉलीपॉप आज इनसे छीन के चला गया है। All right, Mr. Aditya Jha of the BJP and Mr. Sapra of the Congress, I'm afraid we'll have to leave it at that. The BJP, of course, there continues to maintain it is a political party's prerogative here to be making in any kind of announcement in their election manifesto.